The P1 Milord. The petitioner has filed a complaint under section 200 of the CRPC because the complaint made by the petitioner has not entertained by the concerned police authority in respect of the registered FIR in respect of the cognitive offense law. In respect of Cognitive offense law. ये जो FIR दर्ज हो चुकी है, नहीं सर इसमें अब क्या है पढ़िएगा। पेज नंबर 13 मिलो। आप पेशे से पत्रकार हैं, मिलो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विद्यालय में कुलपति के पद पर पदस्थ हैं। उसे जानकारी प्राप्त है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती में विभिन्न पदों में रोस्टर में छेड़खानी करते हुए गड़बड़ी की गई। उसने वर्ष 16 से 19 तक के दस्तावेज विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए, जिससे देखकर गड़बड़ी हुई। बताइएगा क्या रोस्टर होना चाहिए था। Lord, I have annexed the documents, Lord. Council, just show us that what should have been the correct roster and which roster was followed. That will be the end of the matter. No, I have made in the certain points in. We will not go by your points. We are asking you a very categorical thing. Your allegation is that while the respondent acting as a vice chancellor made certain recruitments, and during that recruitment process, No. there was tampering with the roster. Now show us the document which was the standard roster prescribed for the recruitment for that post and the roster which was adopted by the university. बता दीजिए इतना सर। ये पैरा 3 में हमने स्पेसिफिकली वो पॉइंट आउट किया है, जो रोस्टर था जनरल डॉक्यूमेंट बताइए वकील साहब, ऐसे हवा में नहीं चलेगा। ये एक तो क्या होता है, आपका जो लोकस है उसी से जो है थोड़ा सा सचेत हो जाना पड़ता है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लोकस के आधार पे फैक्ट आपसे पूछ रहे हैं, वो रोस्टर बताइए जो इन्होंने लागू किया। Please show us, will not show us the roster which was followed by the university and the roster which according to you should have been followed. Show us that document. That document has not attached with the private complaint. Lord, there is 400, near about 400 pages. That's why I have not annexed that page. No. I have annexed the list, my lord, kindly appreciate. And specifically pleaded in para 3. Kindly for a moment, my lord, appreciate para 3 of Istagasa, my lord, page number 16. Annexure? Annexure P2, my lord. P2 है नहीं, A है। Sorry, my lord. A2, page number 16. पेज नंबर 16 पढ़िएगा। यह कि शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर, आरक्षण रजिस्टर, रिक्त पद, बैकलॉग पोस्ट स्थिति निर्धारण, आरक्षित पद का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण किया गया था। इन रिकॉर्ड के आधार पर भर्ती किया गया था। परिवादी ने वर्ष 2015, वर्ष 2016, 2017 के रोस्टर और आरक्षण रजिस्टर को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2020 में अभियुक्त ने रोस्टर रजिस्टर, रिजर्वेशन रजिस्टर, शार्ट फॉल, बैकलॉग पोस्ट, पोजीशन, ईयरमार्क, रिक्त पोस्ट और रिमार्क में धोखाधड़ी करते हुए इन अभिलेखों में गुप्त रूप से परिवर्तन करके रचना करके वर्ष 2020 में एक फर्जी आरक्षण रजिस्टर और रोस्टर रजिस्टर तैयार करके अभियुक्त ने पिछड़े वर्ष अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को गलत नुकसान पहुंचाकर समाज के विरुद्ध। बताइए ना 2020 में कितने पद थे? किस रोस्टर पॉइंट के थे? Lord, even the petitioner has applied under the RTI. Yeah, we are not concerned with it. You are the complainant. We understand service jurisprudence very well. We want to know. First of all, you are required to show. Now the scope will be further extended. Exactly. That how many posts were there against each of the categories: assistant professor, associate professor, and professor. Then you will have to show that in the year 2020, how many posts were vacant. They were from which of the categories. Then you will be required to show that how those posts were to be filled and against which roster point. The aforesaid documents have annexed with the complaint. My lord, next week I will file that document. ऐसा नहीं होता ब्रह्मेंद्र जी, ब्लैकमेलिंग बंद करिए, अपने पक्षकार को बताइए ब्लैकमेलिंग बंद कर। नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं है सर, इसमें एक चीज और देखेंगे थोड़ा सा। ट्रायल कोर्ट में दस्तावेज था वो दिखाइए। विल नॉट ग्रांट यू एडजॉर्नमेंट। I will file. Show us the document. For a moment, kindly appreciate the page number 26. My lord, that is a list. List of what? List of documents which have submitted before the learned trial court along with the istagasa. जी हाँ पढ़िएगा। ये तफसील दस्तावेज सीरियल नंबर रिलेवेंट है उतना पढ़िएगा। पेज वर्ष नंबर 2016-17 में असिस्टेंट प्रोफेसर। We are not concerned with it. Allegation is in the year in regard to year 2020. ये सर ये पैरा नंबर 6 पेज नंबर 27।
हाँ क्या है? 27 में पैरा नंबर 6 रोस्टर में छेड़छाड़ करके भर्ती। पहले तो आपसे हम जो पूछ रहे हैं, जी। पहले बताइए विज्ञापन कहाँ है? पहले नंबर ऑफ पोस्ट बतानी पड़ेंगी आपको जिनके लिए विज्ञापन निकला। ये 7/9/2020 का विज्ञापन था सर। कहाँ है ये वो 52 पृष्ठ 2020 का? ये 52 पृष्ठ का था सर। इस पे एनेक्स नहीं किया है हमने, लिस्ट बस की है चूंकि ऐसा नहीं 3-4 होता है। आई विल फाइल मिलोड। नहीं नहीं, मिलोड वन वीक टाइम में भी ग्रांटेड मिलोड बिकॉज़ देयर इज। जो दस्तावेज नीचे नहीं है उसको हम यहाँ कैसे ले लेंगे सर? नहीं, वो ट्रायल कोर्ट के सामने। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नहीं है जो दस्तावेज उसको यहाँ नहीं लिया जा सकता। मिलोड हमने उसे फॉर क्लियर ऑर्डर किया। फॉर मोमेंट मिलोड काइंडली अप्रिशिएट द स्टेटमेंट ऑफ ये चलिए अब आप मिलोड। ये इसके साथ या तो रिकॉर्ड कॉल कर ले मिलोड, उसमें सारे will not do anything. First you convince us, then we will. I am only 2 days time seeing. No, not even 2 minutes. पढ़िए, ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर में सिर्फ एक पॉइंट। विवादी ने धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के कथन में कहा, आगे पढ़िए कि वो पेशे से पत्रकार है। जी जी। कहाँ है आपका एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट? इस पे नहीं लगाया है सर। क्यों नहीं लगाया? सर चलिए आगे बढ़िए। परिवादी ने धारा 200 अंतर्गत 1973 कथन किया है कि वह पेशे से पत्रकार है। अभियुक्त श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में कुलपति के पद पर पदस्थ है। उसे जानकारी हुई थी कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की भर्ती में विभिन्न पदों में रोस्टर में छेड़छाड़ करते हुए गड़बड़ी की गई है। उसने वर्ष 2016 से 19 तक के दस्तावेज विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए, जिन्हें देखकर प्रतीत होता है कि गड़बड़ी हुई थी और सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज मांगने पर उन्हें वेबसाइट से हटा दिया गया। आरोपी के द्वारा जाली दस्तावेज तैयार किए गए जो उसके द्वारा सूची के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कार्य समिति के सदस्य नरेंद्र मरावी के हस्ताक्षर भी होने चाहिए थे, जो दर्शित भी हो रहे हैं। और नरेंद्र मरावी ने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसकी शिकायत उसने कई जगह की थी। साक्षी नरेंद्र सिंह मरावी ने अपने कथन में कहा है कि वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में भारत सरकार की तरफ से नामित कार्य परिषद का सदस्य रहा है तथा मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष भी रहा है। उसने कार्य परिषद की बैठक में हस्ताक्षर नहीं किए और आरोपी ने किसी दूसरे व्यक्ति से उसके हस्ताक्षर करा दिए। प्रकाश मणि त्रिपाठी के द्वारा अगस्त 2021 से अगस्त 2023 तक लगभग 2 वर्षों तक कार्य परिषद की भर्ती एवं कूटरचित यूनिट बनाकर छल कार्य थी। परिवादी अजय मिश्रा के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में ऐसा कोई कथन नहीं किया कि उसने किसी थाने में कोई रिपोर्ट लिखाई हो और पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से इनकार किया हो, तब उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को शिकायत भेजी गई। Unless he say that police refused to lodge a FIR, he cannot cite a क्या कहते हैं? सही तो चलिए। I have annexed that document below along with the इस्तगासा मिलोड। Kindly appreciate page number 28. जी। वहाँ सिलेक्शन लेना पड़ेगा। जजमेंट लाए क्या आप अपने पास? इसी में हमारे रिटर्न आर्गुमेंट्स में है सर। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पेज नंबर 37 पे है सर। पेज 37 पे मिलो। ये बताइए क्या है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2010 का सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिक्वायर्स कंसिडरेशन इन वेदर पेज
page 37. 37. In excerpt A5. In excerpt A4. क्या कहा है उसने? The next question which requires consideration is whether the appellant has the locus standi to file a complaint for prosecution of respondent number 2 for the offence illegally committed by him under the act under the 1980 Act. There is no provisions either. The locus standi पर है भाई. जी. We want to know that have you brought any judgment to say जी. that despite not making any efforts to lodge a FIR in a matter of a cognizable offence, जी. you are still, it is still open to you to file a private complaint. I have filed, madam. Where is the police complaint? Police complaint is I have kindly appreciate para 8 of the complaint, my lord. डॉक्यूमेंट तो दिखाइए ना आपने कि पुलिस मिलोट ये भाई अगर आपने पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था तो आपको एसपी को आवेदन देना चाहिए था. दिया है सर. कहाँ है वो फाइल ये हमारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में यहाँ से दिखाइए, रिवीजन से दिखाइए. रिवीजन में फाइल नहीं की चलिए 400 पेज की लगभग 4 above than 400 pages are documents, my lord. That's why I am making a request to call the record. रिपोर्ट लिखाई थी तब उसके बाद चिक्को खुद से जाते हैं वो भी कथन नहीं पुलिस कथन में नहीं डॉक्यूमेंट भी नहीं स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं उनका स्टेटमेंट A2 लगाए सॉरी A3 लगाए A3 पढ़ लेते हैं. तो उसमें तो क्यों वारंट तो लगेगा अगर ओबीसी पर ईडब्ल्यू उसने कन्वर्ट किया था. कहीं नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा नहीं चेम्बर में यही लिखा था चेम्बर देखिए. This criminal revision is filed by one Ajay Mishra who professes himself to be a journalist, though he has not filed copy of any accreditation certificate or I card showing himself to be journalist, being aggrieved of the order dated 5/7/2024 passed by learned first additional session judge Anupur, rejecting private complaint under section 200 CRPC, 1973, and which was filed to register a case against Professor Shri Prakash Mani Tripathi, who was at the relevant point of time Vice Chancellor of Indira Gandhi Rashtriya Janjati Vishwavidyalaya, Amarkantak, under section 420, 467, 468, 471 IPC, or and section 13(1)(c) and 13(1)(d) read with section 13(2) and section 7B, 7C and section 13 within bracket 1 of the Prevention of Corruption Act as amended in the year 2018. Full stop. Next paragraph. Stated that this complaint has been arbitrarily rejected only on the ground that the complainant had not made any statement as contained in Annexure P3 to show that he had ever approached the police station to lodge a FIR in the matter of a cognizable offence, or in the alternative had approached the Superintendent of Police Anupur, sending him a complaint in writing, and thus it is held that
since there is no material on record to take cognizance on the complaint made by the petitioner, and also in absence of the necessary legal formalities being completed by the petitioner, impugned order is passed. Next one. Learned counsel for the petitioner Shri Brahmendra Pathak places reliance on the judgment of Supreme Court in Dr. Subramaniam Swamy versus Dr. Manmohan Singh and another, decided on 31st January 2012 in criminal appeal arising out of SLP within bracket C bracket close NO 27535 of 2010, that there is, within inverted commas, there is no provision either in the 1988 Act or the Code of Criminal Procedure 1973 which bars a citizen from filing a complaint for prosecution of a public servant who is alleged to have committed an offence. Next fact. Thus, placing reliance on this judgment, it is submitted that the impugned order of the trial court is uncalled for. Next fact. Reliance is also placed on the judgment of division bench of this High Court in CRR 1629/2022, Shri Beni Prasad Chansoria versus the state of Madhya Pradesh and others, decided on 9/12/2022, wherein it is held that the special court is not prevented from conducting any inquiry at its own level while dealing with an application under section 156 within bracket 3 bracket close CRPC without assistance of the police. Full stop. It is further noted that verdict of Anil Kumar Supra will not come in the way of the trial court while deciding an application under section 156(3) for the reason of Anil Kumar not being the law qua section 17A. Full stop. However, in the present case, when we wanted to know from Shri Brahmendra Pathak as to what was the roster prescribed for the recruitment, number of vacancies, the number of sanctioned posts in the cadre of assistant professor, associate professor and professor, number of posts which were advertised, number of posts which were already filled through members of different categories, and also that how the roster which was adopted for recruitment was faulty vis-a-vis the standard roster which is part of the rules for reservation, Shri Brahmendra Pathak is not in a position to assess this court. Next fact. Law laid down by Supreme Court in Subramaniam Swamy is on a different footing. It is on the ground of locus of a person to file a complaint. Full stop. In the present case, locus is not under question. Full stop. Trial section 156 provides that deals with police officers apostrophe has power to investigate cognizable offence. Any officer in charge of a police station may Section 154 कर दीजिए, deals with information in cognizable cases. Full stop. Admittedly, petitioner did not take recourse to Section 154 as is noted by the trial court and as is evident from his statements contained in Annexure P3 which were recorded by the trial court on 11/1/2024. Thereafter, Section 156(3) empowers a magistrate under Section 190
रहने दीजिए 156 रहने दीजिए. Full stop. Thus, remedy was open to the petitioner to have taken recourse to section 154 or to have approached the superintendent of police by giving a written complaint. Full stop. When petitioner failed to avail the alternate statutory remedy. नहीं मतलब अच्छा है. Though he has stated in the complaint, he has stated that he has filed the report and he has. अच्छा ठीक है, ऐसा लिखिए. क्या लिखा? नहीं ऐसा. When the petitioner has mentioned in his complaint that he had taken recourse to these proceedings but has failed to substantiate them while recording his statement under section 202 eh? Under 200 CRPC, then not taking cognizance by the trial court cannot be faulted with. For the reasons assigned in the impugned order, मतलब the order of not taking cognizance cannot be faulted with. मतलब Revision fails and is dismissed. मतलब I want to submit something आप मतलब बताइएगा. ये पैरा 8 का जो इस्तगासा का है उस पे स्पेसिफिक प्लीडिंग है और न सिर्फ हमने पुलिस थाने और एसपी के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज मैं करिए. मतलब रेमेडी रहेगी वहां. नहीं जस्ट सॉरी, अब नहीं, बहस के बाद. नहीं ऑर्डर के मेरा बाद, निवेदन ऑर्डर है। के बाद नहीं. सॉरी, नहीं, केवल 2 चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ मिलोट जो कि हमारे आर्गुमेंट में नहीं आ पाया कोई बात जो- नहीं, अब नहीं आया. ये Next. ये हमारे उसकी कॉपी हमने लगाई सर इस्तगासा के साथ ये ट्रायल कोर्ट से डॉक्यूमेंट लिया उसी के साथ आपने बयान में क्यों नहीं कहा? नहीं तो आपके उसके साथ बयान में क्या तकलीफ थी आपको कहने में? उतने उसमें एग्जिबिट नहीं पड़ेगा बयान में. और अब जब आप बयान देंगे, जी बयान में आप एग्जिबिट नहीं डालेंगे. पैरा तो उस समय नहीं डलता शायद सर प्राइमरी एविडेंस में प्राइमरी स्टेटमेंट में नहीं डलता सर. ठीक है, रहने. अच्छा ये पैरा 8 में भी एक लाइन और देख लें सर जस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मिलोट ये जो 2 नंबर के विटनेस है नरेंद्र सिंह मरावी उनके फोर्ज सिग्नेचर हुए हैं वो भी उन्होंने कोर्ट स्टेटमेंट में कहा है. पेज नंबर 32 को देख लें सर थोड़ा देख सा. लिया. चलिए नेक्स्ट केस. या लिबर्टी दे दें सर हम फिर से कोई लिबर्टी नहीं. विल नॉट परपिचुएट ब्लैकमेलिंग. नो नॉट ब्लैकमेलिंग मिस्टर मरावी हैज अ सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन. ही वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तो अध्यक्ष भी हैं, जी वो कर लेंगे अपना बट केस. देयर इज Sorry. ह्यूज करप्शन हैज चलिए, इन्वॉल्वड इन चलिए, दिस केस में. चलिए. एडमिशन के लिए लगा साहब एडमिट नहीं होता. लिखिएगा. अपील इज एडमिटेड फॉर फाइनल ईयर. अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इज एडमिटेड फॉर फाइनल ईयर. लिस्ट फॉर फाइनल ईयर. रिकॉर्ड आ गया. रिकॉर्ड इज ऑलरेडी अवेलेबल. लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग इन पार्ट बी ऑफ द कॉज लिस्ट एज पर इट्स टर्न एंड सीनियरिटी. सेम साहब सेम है ये भी कन्विक्शन के अगेंस्ट. जी साहब सेम. जी सर इसमें बेल भी हो गई 10-10 23 को. 40 में भी